हेलो एवरीवन, मैं हूं जोहा, आपकी बॉटनी एजुकेटर। नीट एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कंफ्यूजन भी होती है। उसी तरह की कुछ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे क्विकली और कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स, हाउ टू रिमेम्बर दिस, एंड उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के सारे एंजाइम्स, सो दैट आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, राइट? So let us begin. What is glycolysis first? Glycolysis is the very first step, or you can also say common step between aerobic and anaerobic respiration, right? Glycolysis is the step जहाँ से aerobic या anaerobic respiration start होती है, where one molecule of glucose oxidizes partially to give out two molecules of pyruvic acid. But it includes 10 big steps, right? Also followed by the 10 enzymes, right? तो याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसी कंफ्यूजन को जल्दी से दूर करते हैं। द ट्रिक इज great grandfather fills glass daily by 3 peck 2 peck playing ping pong. All right, so great stand for glucose, grand stand for glucose 6 phosphate, father fructose fills fructose 1,6 bis phosphate, glass daily glyceraldehyde 3 phosphate, D stand for dihydroxyacetone phosphate, by stand for 1,3 bis phosphoglyceric acid, 3 peck 3 phosphoglyceric acid, 2 peck 2 phosphoglyceric acid, playing phosphoenol pyruvate and ping pong pyruvate. So that is how the glucose, one molecule of glucose gets converted into two molecules of pyruvic acid. So easy peasy, right? The next one is how to remember the enzymes that are there in the glycolysis. Glycolysis में 10 enzymes भी हैं, उन पे भी questions आ सकते हैं. So the 10 steps and the 10 enzymes are written in front of you. उनको कैसे याद रखना है? The trick is how I pass all India's difficult pre-medical entrance perfectly. I hope आप सभी एग्जाम देने के बाद, नीट एग्जाम देने के बाद बोल पाए. Okay, so how hexokinase, where glucose gets converted into glucose 6 phosphate. I isomerase phosphofructo, और इसे हम ऐसे भी बोलते हैं phosphofructo isomerase, very important enzyme, where glucose 6 phosphate gets converted into fructose 6 phosphate. Then PAS, where PAS stands for phosphofructokinase, where fructose 6 phosphate gets converted into fructose 1,6 bis phosphate enzyme. Again, this is a very important enzyme, phosphofructokinase. Please remember this, star mark it. Okay, then all stand for aldolase, where fructose 1,6 bis phosphate molecule gets split up into molecules of glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate. उसके लिए आपको एंजाइम याद रखनी है aldolase. Okay, then this dihydroxyacetone phosphate DAP will isomerase, so the enzyme is isomerase only into glyceraldehyde 3 phosphate. Okay, now the next one is difficult stand for dehydrogenase, which act on glyceraldehyde 3 phosphates and convert it into 1,3 bis phosphoglyceric acid. 1,3 bis phosphoglyceric acid further converted into 3 phosphoglyceric acid. The enzyme is phosphoglycerate kinase, and the mnemonic here is pre. Medical stand for mutase, that converts 3 phosphoglyceric acid into 2 phosphoglyceric acid. Then entrance enolase ultimately gets converted into phosphoenol pyruvate, and perfectly stand for pyruvate kinase, where it converted into pyruvate. Okay, so 10 steps, 10 enzymes, and this is a mnemonic. Krebs cycle, जी हाँ, Krebs cycle के steps याद करने में confusion अब नहीं होगी. Okay, so let us quickly go through it. The mnemonic is Officer Akash can I often keep selling substances for money. Officer Akash can I often keep selling substances for money. Officer stand for oxaloacetic acid. Akash acetyl CoA, when condensed together to form citric acid, that is can. I isocitric acid. Often oxalosuccinate. Keep alpha ketogluteric acid. Selling succinyl CoA substances. Succinate for fumarate, money, malate. So remember this mnemonic and better remember the steps for Krebs cycle. Electron transport chain is the last step of aerobic respiration, जहाँ पे NADH, FADH2 enter करते हैं and ultimately gives out ATP.
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैज डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एंड उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। इन सभी पे नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट अस क्विकली रिवाइज सम ट्रिक्स टू revise all the components and the complexes of the electron transport chain. तो सबसे पहले जो complexes हैं, these are NADH dehydrogenase, succinic dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase and ATP synthase. तो अगर हम बात करें mnemonic की, so we have naughty sugar psychocalling ATP, naughty sugar psychocalling ATP, naughty NADH dehydrogenase, sugar succinic dehydrogenase, psycho cytochrome BC1, calling cytochrome oxidase, ATP, ATP synthase. Okay, now their respective components. इसके लिए ट्रिक यूज कर रहे हैं, FM, FM रेडियो वाला FM, FM फिर से फेडेड फिर से, FM फिर से फेडेड फिर से, तो FM मीन्स FMM, फिर से मीन्स आयरन सल्फर, फेडेड मीन्स FAD, फिर से मीन्स आयरन सल्फर। ओके, तो जब FM फेड हो गया तो लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दी, FM सुनना बंद कर दिया, तो बातचीत फिर से शुरू हो गई। B स्टैंड फॉर साइटोक्रोम B, C स्टैंड फॉर साइटोक्रोम C1, फिर से आयरन सल्फर। ओके, so 1 2 3 3 complexes has iron sulfur, remember it। उसके बाद जब बातचीत कर रहे हैं तो चाय वगैरह भी पियेंगे, तो आओ कप A, आओ कप से चाय पिए, A साइटोक्रोम A3, 2 कॉपर कप है इसमें, 2 कप्स। देन देख बातचीत करते करते हम फीफा का गेम देख रहे हैं, फीफा, राइट। सो इसके लिए FO F1 पार्टिकल। आई होप यू लाइक द ट्रिक, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर इट प्रॉपरली। थैंक यू।